Hello everyone, this is Dr.Pawnesh, a medical doctor, author and NLP practitioner, and today we are going to talk about self-love. और जब भी self-love की बात करते हैं, I never forget a story, a real incident that happened to my life with my friend Tina, of course a changed name. Tina crying hysterically, and we'd been talking for an hour. एक घंटे से हम लोग बात कर रहे थे and she had been crying, and we were talking, discussing lots of things, but crux वही था. He is misunderstanding me. In his eyes, I'm a cheater. I'm a liar. And she was talking about all the things in his eyes, in her eyes, in everybody else's eyes. And this is really strange and at the same time interesting to see. कितनी बार हम खुद को किसी और की आंखों से देख पाते हैं और या हम सोचते हैं कि हम देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही थी, वो अपने आप को हर उस पर्सन की आंखों से देख रही थी जो उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहा था. एंड नो वंडर शी वॉज फीलिंग सो बैड. एंड सडनली समथिंग केम टू माई माइंड. आई सेड, टीना, लेट्स टॉक रियल नाउ. तुम इतनी देर से बात कर रहे हो, दिस बीन अ लॉन्ग टाइम जब हम बात कर रहे हैं, तुम कह रहे हो कि इसकी नज़र से मैं ऐसी हूँ, इसकी नज़र से मैं ऐसी हूँ, ये मुझे ऐसा समझ रहा है. हैव यू एवर ट्राइड टू सी योर सेल्फ through the eyes of someone who loves you? And she was like, what? I said, तुम्हें वैसे भी नहीं पता कि सामने वाले की आंखों में तुम क्या हो. कोई एक पर्सन बताओ तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें पता कि तुम्हें 100% प्यार करता है. And she mentioned her mother, her friend. And then I said, if you just give me a moment and और ये सोचो कि उस पर्सन की नज़र से तुम क्या हो. And suddenly she started to talk about all the great things about her. That she's sensible, she's caring, she is loyal, she is considerate, she is sensitive to people's needs. And in 1 minute's time, I could see the shift happening in her eyes. And suddenly she said, Pawnesh, तुमने एक घंटे में जो भी बकवास was the word she used, and but after that what she said was actually right, actually very nice. She said all the हम लोगों ने एक घंटा में जितने बकवास की है, ये एक लाइन जो तुमने लास्ट में कही, that was more powerful than all the lines. We all want to say, we all talk about self-love, self-care, but what is it? If you want to experience it, I want you to take 1 minute sometimes in the day and think. आप अपने आप को उस पर्सन की आंखों से देखो जो आपको प्यार करता है, या जो आपका क्लोज फ्रेंड है, या जो आपको अप्रिशिएट करता है, एंड देन यू विल बिगिन टू सी कि आपकी रियल क्वालिटीज क्या है. एंड दैट इज, और लाइफ में अगर आप एक बार भी इसको करोगे ना, यू विल बिगिन टू सी द गुडनेस इन यू, जो लोग देख पाते हैं. लेकिन हम कई बार इतने ऑब्सेस्ड होते हैं उन लोगों की आंखों से अपने आप को देखने में जो हमें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, एंड देन वी बिगिन टू फील बैड. So what will happen when we cultivate this self love? This is not like obsessed. आपको कभी कोई पर्सन मिला है जो कहता है मैं आई लव माई सेल्फ, बट आपको लगता है वो प्यार में नहीं है, ऑब्सेस्ड है अपने साथ. एंड बहुत बार ये चीज़ें कंपनसेशन होती है. दे आर फीलिंग इंफीरियर इनसाइड, बट दे वांट टू प्रूव सुपीरियर, एंड दैट दे कॉल सेल्फ लव, राइट? बट सेल्फ लव इज नॉट समथिंग वेयर यू आर थिंकिंग यू आर सुपीरियर देन एनीबडी एल्स. When we talk about Bible says अपने नेबर्स को उतना ही प्यार करो जितना तुम खुद से प्यार करते हो, अपने से ज़्यादा नहीं, राइट? एंड इफ यू टॉक अबाउट सेल्फ लव उतना ही है जितना तुम. एंड सेल्फ लव डजंट मीन बीइंग ऑब्सेस्ड विद योरसेल्फ. एंड व्हेन यू हैव अ हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, you are aware of lots of qualities you have, and you have faults and you have some shortcomings, not faults and shortcomings, but some areas of improvement, and you appreciate them as well. और पहला तरीका इसको देखने का है, take time, put some nice music on and sit in a quiet place. And then when you sit at a quiet place, imagine आप कहीं बैठे हो और अपनी लाइफ स्टोरी लिख रहे हो. एंड देन सडनली यू बिगिन टू सी योर सेल्फ. इमेजिन करेंगे आप जैसे आप अपने आप को उस पर्सन की आंखों से देख रहे हो जो आपसे प्यार करता है. अब जब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं एक एक्सरसाइज का पीडीएफ भेज रहा हूँ जिसको आप हल्के से अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं. इट्स सिंपल, बट जैसे ही आप अपने आप को किसी उस पर्सन की आंखों से देखना शुरू करते हैं हु लव्स यू, यू बिगिन टू सी द क्वालिटीज़ जो शायद आप तब नहीं देख सकते जब आप अपने आप को किसी ऐसे पर्सन की आंखों से देख रहे हैं जो आपको जज कर रहा है, जो आपको इवेलुएट कर रहा है. दोनों में से सच कौन सा है? जो आप मानोगे. और जो आप मानोगे उसी से आपका बिहेवियर, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स अफेक्ट होंगे. एंड व्हाट इज द सेकंड वन? द फर्स्ट वन वाज seeing yourself through the eyes of someone who loves you. Second is
create an ideal self image. आपका फ्यूचर सेल्फ इज मच बेटर देन यू थिंक। और जैसे आप देखना चाहते हो, सी योर सेल्फ परफेक्ट। हाउ डू यू वांट टू लुक फिजिकली? हाउ डू यू वांट टू साउंड योर वॉइस? हाउ डू यू वांट टू एक्ट in various situations, and see all the qualities that you want to see in your future self. That doesn't mean कि आप उन qualities को appreciate नहीं कर रहे हो जो आप में already है, right? So a healthy self concept is जहाँ पे आप अपनी सारी strengths को appreciate कर रहे हो, at the same time you are also moving towards a beautiful, attractive, compelling image of yourself. You see yourself smart, you see yourself happy, you see yourself getting along with people the way you want to be, you see yourself somebody who's focused, who's resilient, or whatever quality you want to see, and see that image. And when you see that image, you will begin to find gradually, you will begin to become that person. Because every single day, when you see that image in your mind's eye and make that image a constant companion of yourself, you will begin to see that you are becoming that person. And when you become that person, you'll find ways to improve yourself better. So it's a constant ongoing journey. It's really. So third is, don't just think inside your head, act. If you love yourself, find time to make yourself happy. What makes you happy? अकेले में कहीं बैठ के कॉफी पीना आपको हैप्पी करता है? डू दैट, मेक टाइम फॉर दैट। अगर आपको कोई किताब पढ़ना पसंद है, आपको फ्रेंड्स के साथ चैट करना पसंद है, इवन आपको सोशल मीडिया में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगा के यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू say that's a self care, do that. Of course, you're doing that in a healthy way. And when you look at that like an attempt of self care, you will begin to like it. And when you do that, when you begin to like it, you will find आप और ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाओगे. And when you do that, you will start to fall more in love with yourself. You'll begin to like yourself. And guess what? When you like yourself, people will like you as well. So three things. First, how to do that? See yourself through the eyes of someone who loves you. Two, build an ideal, compelling image of yourself. And third, take time to do the self care. And within a week's time or 10 days' time, you will begin to shift your energies. And people will notice that. And they don't know why they are attracted towards you, but you know why that is happening. That's all for today. So do subscribe to my channel and hit the bell icon so that मैं हर हफ्ते 2 नए वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, so that you don't miss on them and get them on time. See you there.